Never mind these failures, these little backslidings. Hold the ideal 1,000 times. And if you fail 1,000 times, make the attempt once more. These great words of Swami Vivekananda have been proved once again by a boy who failed many times yet never gave up. Let us welcome on yet another session of SSP Crack Talks the boy who will be very soon joining the INA Ezimala. Let us please welcome the guest of today's session, Mr. Ashish Kumar Pandey. Hi Ashish, how are you? Hello, ma'am. Good evening. I am very fine. What about you? Yeah, I am good too. Thank you so much, Ashish. First of all, Ashish, I want to congratulate you for getting recommended for this Navy 10 plus 2 BTech entry. So I heard that a lot of struggle you went through. And at one point of time, you also thought that maybe they will not take you. But you Yes, ma'am. are successful today. So hats off to you that you kept that motivation going on and you are successful at the end of the day. So my first question is, Ashish, to you. How are you feeling after getting recommended for Navy 10 plus 2 BTech entry? Although it's the second time, but for me, its feeling is totally different from the first time. Why? Because it's been a long journey, and it's a kind of feeling which can't be described in words very easily. It's a way long through a journey of 2 years, which took me so long to reach here. So it's very fabulous and fantastic efforts and journey and all those struggle days. At last, they are worth it now. Very nice, Ashish. So, how your friends and family reacted when they came to know that you are recommended on the very result day itself? On the very result day, none of my friends knew actually in the college also that I am going for the interview. I called my mother. I said, "Mera ho gaya hai," and they were not even believing कि हो गया है. They confirmed me twice and thrice, like सही में हो गया है. Then I said, "हाँ." Then my father was on duty. I called him, "Papa हो गया है मेरा." Then he was like, he was very happy. I can imagine him there. He never gets happy very too frequently, like कि हाँ 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 चलो ज़्यादा जल्दी खुश नहीं होना चाहिए जब तक सब नहीं हो जाता. But he was also like, हाँ हाँ चलो अच्छा है लगे रहो इसी तरीके से. Then he switched the phone that I'm on duty, I'll call you later. Then I called my roommate कि भाई हो गया. Then he said बस मेडिकल कर ले अब बस अब INA की चिट्ठी लगी हुई है. Very nice. We will also wait for that day, Ashish. So, my next question is, how did you get motivated for joining defense or armed forces? Ma'am, for me, joining defense, I think it's in my blood and intravenous itself because I come from such a background. My father is also in Air Force. So if a defense brat also needs a motivation, then I think he or she should not join the force itself. Because from Okay. the childhood onwards, it's his or her upbringing in such a way that he should join defense if he wants, and he definitely this give you such an, I think, an upper hand that you have that inculcated from your childhood itself. You need not to get it from outside कि हाँ यार मुझे कुछ और देखना है मुझे motivation चाहिए. No, it's in the house itself. So, you said that your father is a defense personnel himself. Yeah. So, could you remember any golden advice, any golden tip he has given you? A key to success, I would say. मेरे पापा ने बस मैम once he said कि बाबू एक चीज ध्यान रखना कि मेहनत की है तो बर्बाद तो नहीं जाएगी आज नहीं तो कल काम जरूर आएगी. I was going again and again and again. Once a time, my parents also said कि if it's not working, then focus on college, get a college, or try after graduation. But I remember his advice कि मेहनत बेकार नहीं जाती है. एकदम बिल्कुल. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि आपने 4 बार एनडीए रिटन एग्जाम क्लियर किए हैं, तो आपने प्रिपेयर कैसे किए एनडीए के लिए? Ma'am, for written NDA, I didn't took any specific coaching. I just had one NDA Pathfinder book which have previous year questions, and I focused on my class 12th syllabus, especially calculus part. And firstly, I focused upon at least I should focus on the cutoff, and if I reach the cutoff, then I will boost up my score further. So maths and English was the key, because of which I qualified NDA. And there was a time I just got 3 days to prepare for in my 145 and 146 course of NDA. I prepared just in 3 days because I was struggling through my medicals of 144 course then. And in that 3 days, I didn't slept like for, I think slept around 2 or 3 hours. And I just kept on doing PYQs. If you'll see my Pathfinder, it's around 4 ticks on each question. I remember each question now. If you'll give me question, I'll give you the answer without seeing the option. It's like that. Wow, that is a top-notch preparation you have done yourself, Ashish. Hats off Right. to you. So, मेरा next question है उन लोग के लिए जो हमारे viewers है. बहुत सारे लोग अभी upcoming ND exam देने वाले हैं, तो उनके लिए आप कौन से suggestions देना चाहोगे?
See, जो भी upcoming aspirants हैं, first you should know what are your strong points and what are your weak points. You should accept that fact that yeah, you should not be strong on each and every aspect. You can be, but not always. So you should accept that fact and keep on working which are your strong point first. Rather, if you have time, then go for your weak points at least, because maths you have 120 question. It's not like that you should focus on firstly this thing, this thing. We have ample number of questions. You need to do at least 60, 65 questions first to be in the at least such a way that you can have an ample of score if you get negative marking as well. So for that, at least focus on your strong points first. Practice as much as PIQs you can. Then go for extra question if you have time. Then it will definitely boost your score further. And by that time, if you reach that stage, obviously you will qualify that. Okay, so smart work is very essential. आपकी बात सुन Definitely. के ऐसा ही लगा. Because paper का pattern देखना बहुत important है. The way paper is coming. If you see in GAT portion, English is very crucial. English definitely boosts up your marks. It's not like that कि बहुत high level English आती है. बहुत common English है. Practice some PIQs, you will get to know. Even in GAT section, for me, a student like me who never focused on history and polity like these things, I focused on science. साइंस के एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, आप उन्हें अटेम्प्ट करो. जैसे पॉलिटी इजी है, ज्योग्राफी इट्स लाइक टू बी कि हाँ आप समझ सकते हो. It's not like आपको सब कुछ मगअप करना है. So focus on that areas, focus on current affairs. These things that can boost up your score. You'll invest your time in such a thing which will not give you result. So definitely at last कोई ये नहीं पूछेगा आपने कितने टाइम हिस्ट्री पढ़ी, सभी पूछेंगे आपका स्कोर क्या आया. So that is the thing which is important. Very good, very good, very good advice. I would say कि अपने strong points को ही utilize करके preparation करना है ना? Exactly. So now we will come to the SSB journey, क्योंकि काफी tough nut थे वो आपके लिए. It was a tough nut to crack. So what or how you went through this SSB journey? काफी लंबी होने वाली है आपकी experience, क्योंकि बहुत सारे SSB attempts में आप गए हो. तो हम लोग को थोड़ा सा जर्नी के बारे में बता दीजिए कि आपको मतलब एसएसबी की जो जर्नी थी वो कैसे आपने तैयार किया, कैसे क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, उनको कैसे आप ओवरकम किए. फर्स्टली मैं एक चीज बहुत क्लियर कर देता हूँ. इफ यू आर रिकमेंडेड वंस, इट डजंट मीन यू विल गेट रिकमेंडेड अगेन वेरी इजीली, because I am such an example. I got made it in my very first attempt. Then consecutively, I got conference out in 5 attempts. Then in my 7th attempt, I made it again. So for my first attempt, I risked my board exams as well for SSB preparation. I went for a coaching. I came back and I just had 1 week. उसमें मैं बीमार भी पड़ा. Still, I managed that. And after that, my SSB was scheduled in April. In March end, I remember in 2020, but COVID came. It got shifted to July, 15th of July, even it's been 2 years when I started my journey in the July month. So in my first attempt, I made it. I got medically unfit. My first attempt, like जो भी first attempt जाते हैं उनकी मेरी advice है, if you make it, then first attempt वाले अपनी गलतियां नहीं ढूंढते. They're like कि हाँ हम तो हो गए, हम ही रह जाएं. So ये एक बहुत बड़ा fact है जो मैंने देखा. And in my second attempt, what I believe, if you need to be practiced, but not so much of practice, because over practice is such a thing which will take you down definitely. Because if you get something which you don't know or something from outside there, you will believe कि यार मैंने तो इतनी की है and ये सब तो out of syllabus आ गया, and that much of pressure, further वो और pressure डालेंगे SSS, that to handle that you require so much of calmness. So that is one thing. In my first attempt, I recommended from 21 SSB Bhopal. Second attempt, I got conference out from the same board in the December. Then I went for 145 course Allahabad, and there no one will believe 6 images I got which I practiced on my prayer hand in my home itself. Those images are circulating. Still, I got conferenced out because I always believe psychology is one of my strongest point, and because of psychology only, I got conferenced out in my second attempt. So I just figured out my points which went wrong. And after that, I went for 146 for Allahabad. After that, Navy 10+2 BTech in Vishakhapatnam. There also I got conferenced out. Then after that, I went to Kapurthala, TS entry. There also I got conferenced out. Then 148 course, 4 FSB Varanasi, I got conferenced out. Then after that, like last attempt 10+2 BTech entry, there I got recommended. And in the whole journey, what I believe, like it's not like someone is getting conference out and making it to it. It's like कि हाँ यार बंदे ने improve किया है. But for me, it was difficult to convince the assessor why you are getting conference out again. And if you make it once, they always believe, even मैं किसी common इंसान को भी दूंगा तो he'll think कि यार बंदे में कोई तो problem है, कोई question mark आ रहा है. That's why he's not making it again and again and again. So I always realized कि I had to give such a performance that I should be in such a way that assessor should feel कि हाँ यार candidate is good,
but yeah, he is facing something, he's figuring it out, it's taking time, but it's not that he can't do it. And it's a belief that you should all keep it yourself कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, कितने भी बुरा टाइम चल रहा हो, you should always have that small burning flame, even if not flame, एक छोटा दिया जलाए रखो अपने अंदर, कब वो ज्वालामुखी बन के फटेगा you never know. So it's kind of a thing, you should have a belief, sit to yourself, ask yourself if you are made for it, and if answer is yes by your heart, never leave it. वाह, बहुत ही वैल्यूएबल एडवाइस आपने दिया है, जो कि काफी लोगों को थोड़ा सा डाउन फील हो जाता है कि इतनी बार कॉन्फिडेंस आउट हो रहे हैं लेकिन पता नहीं फिर कब रिकमेंडेड होंगे. बट यस, दैट्स अ वेरी मोटिवेटिंग थिंग दैट यू टोल्ड टू ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने एसएसबी के लिए कैसे प्रिपेयर किए हैं? For me, SSB, first attempt, I would say I took advice, I made it there. Then after that, whatever journey I went through, I rectified myself so much. It's not like I said कि हाँ यार I am strong at this point, so I should not see that कि हाँ यार मेरे से कहाँ गलती हो रही है. Most of the aspirants, they are not ready to accept their failures. नहीं यार मैंने तो GTO में अच्छा ही किया था, मेरे को क्यों बाहर कर रहे हैं, मेरा तो GTO अच्छा ही है. Accept it यार, बाहर कर दिया, कहीं तो गलती होगी तभी तो किया है. So first thing is acceptance. मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने देखा कि हाँ यार साइकोलॉजी में मैं बहुत ओवर प्रैक्टिस कर रहा था. लोग क्या करते हैं, कहीं से भी इमेजेस आते हैं, मेरे भी फ्रेंड्स हैं डिफेंस एस्पिरेंट्स की, हर एसएसबी में कम्युनिटी बन जाती है. नंबर ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप्स आई हैव बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ एसएसबीज, इमेजेस आती हैं. आई वाज प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजी सो मच कि व्हेन यू सिट इन द साइकोलॉजी टेस्ट, इफ अ सिमिलर इमेज कम्स ऑन द स्क्रीन, you'll feel like yaar similar image I have practiced in my home, and at that moment my tendency of brain is to get a comfort zone, you'll write the same story and you'll miss out the small things and the little things that they need. If for say some flower pot is kept, some scenery is kept, some pens are kept, you'll always definitely forget them because you have some certain picture in your mind that you have practiced at your home. So you should practice your psychology in such a pace that it should not get into over practice. Also, I believe you should leave psychology practicing at least a week prior to your SSB, so that your mind should be fresh, and when you write, nothing prior comes to your mind that you have practiced earlier. And Wow, as far that as was ma'am interview is concerned, everyone knows 70% of interview is out. Everyone knows the CIQ, everyone knows the strength weakness questions, parents question, family question. अब ओपन आउट पेपर है, सारे क्वेश्चंस पता है, तब भी नहीं हो पा रहा है, तब इससे ज्यादा अच्छा क्या ही होगा. So prepare those questions on peer advance, write those questions, ask yourself कि if I'll be an interview and I need to grill someone upon that, मैं क्या क्वेश्चन पूछूंगा. Ask up to some extent because वहां पे इजी होने वाला है, आप खुद से ज्यादा बना लोगे क्वेश्चंस. Absolutely. I have seen many candidates जो लैक करते हैं अपने प्रेपरेशन में, स्पेसिफिकली फॉर पीआई. उनको लगता है कि बस इंटरव्यू है, क्वेश्चन पूछेंगे, आंसर करना है, पर उसके बीच में दे मिस आउट मेनी ऑफ द प्रेपरेशन दैट दे कुड हैव डन. तो आपका एडवाइस बहुत सही है. उनके लिए जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं इस पर्टिकुलर सेशन को, दे मस्ट और दे शुड प्रिपेयर, अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया अपने पीआईज के लिए. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आशीष कि आपने अपने पर्सनालिटी पे कैसे काम किया और क्या क्या इंप्रूवमेंट्स आपने खुद के अंदर देख पा रहे हो अभी एज कंपेयर टू द फर्स्ट एसएसबी दैट यू वेंट, और अभी जो लास्ट में बिल्कुल 7th अटेम्प्ट में आपने फिर से रिकमेंडेड हुए. तो ये जो जर्नी था, इसके बीच में जो इंप्रूवमेंट्स आप खुद में देख पा रहे हो वो क्या है? Improvement, first of all, the level of I'm not saying I'm very big, but level of maturity as far as the SSP is concerned that I have got is very much. Secondly, in GTO task, I would say I was not कि हाँ यार मैं सारे structures देख के मैं idea निकाल ही लूंगा. But now I'm in such a stage, you give me the structure, I'll give you the idea. So it doesn't matter to me if it is the in the fourth obstacle of PGT or CT, as hard as you can give me, I'm ready for that. Secondly, belief system that I have made for myself, कि no matter whatever is the situation, whatever is the condition, because Kapurthala attempt when I gave, I was so much unhealthy. I was that time. I was so unconscious. My parents told me, if it's not working, वापस आ जाओ. It's not necessary to give the screening. Even I got the screening after out of 362 guys, we 30 or 40 made it to that there only. So in that position also, when I got screened in, I told them कि I'm not well, I'm having weakness, I'm having loose motions, this thing. They told me if you want, you can quit that moment only. But I believed कि यार इतने लोगों में स्क्रीनिंग हुए, कुछ तो बात है, ऐसे कैसे छोड़ देंगे. So I survived that, and after that you paid so much of effort, you could not make it. It doesn't mean you can lose hope. या कॉन्फ्रेंस आउट होने के बाद घर वालों का फोन आ रहा होता है, समझ नहीं आता है क्या करना है क्या नहीं करना है.
बट आफ्टर सर्टेन टाइम यू रियलाइज कि हाँ यार एक सिचुएशन है, आई विल गेट इट टू आउट. एसआरटी में आंसर सब लिखते हैं, रियल लाइफ में उसको इंप्लीमेंट करने में बहुत दम लगता है. एंड फॉर दैट यू नीड सच अ काइंड calmness of mind firstly, which you should keep, and never judge yourself in SSB. एक टेस्ट हो गया, यू विल स्टार्ट एनालाइजिंग कि यार ये गलती हो, ये गलती हो, ये गलती हो. ये मैं करता था. सेकंड अटेम्प्ट में मैंने यही किया, यार यहाँ गलती होगी, यहाँ गलती होगी. वो एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट करेगा आपके ऊपर और कुछ नहीं. प्रॉमिस टू योरसेल्फ, मैं जानता हूँ ये बोलना बहुत आसान है, बट करने में बहुत दम लगेगा. क्योंकि वहां पे आप जब एक एक टेस्ट दे लोगे, बच्चे डिस्कस करेंगे यार तूने कितने ऐड कर दिए, मैंने इतने ऐड कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए. ठीक है यार, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, सबका डोजियर इंडिविजुअली जज होने वाला है. इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन बिटवीन यू एंड मी, इट्स अ कॉम्पिटिशन जस्ट बिटवीन यू. And never ask for whosoever is successful. Even me, candidates ask me, my friends also, ki what questions were asked in your personal interview, how the way you answered. The way I answered, it should be expected by me, expected upon my PIQ. My PIQ and someone else's PIQ cannot be same. And my journey, whatever I had, whatever background I have, cannot be same with other one. None, because some questions in PI is fixed for everyone, but there are some questions which is different, and those will decide the, I think there's that questions will decide your success and failure there, that moment. So which is what important, I believe. एब्सोल्युटली. तो हम लाइक यू वर गोइंग थ्रू सो मेनी फेजेस जहां पे सिर्फ आप कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे थे. आई थिंक 5 कंसेक्यूटिव कॉन्फ्रेंस आउट यू हैव फेस. तो जब एक के बाद एक आप रिकमेंडेशन बिल्कुल आपको नहीं मिल रहा था, एक पॉइंट में आपको ऐसा लगा होगा कि छोड़ देते हैं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. और शायद आपने ये कहा भी कि शायद ऐसा लगा था कि कभी हम मुझे कोई रिकमेंड करेगा ही नहीं शायद से. तो आप के अंदर वो जो ज्वालामुखी आप बोल रहे थे, वो कैसे आप जला के रखे, मतलब मोटिवेशन आपको कहां से मिली कि गिव अप नहीं करना है? Yes ma'am. So for that I believed कि दुनिया बाद में बोलेगी, खुद को भी एक बार लगने लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट की तुक्का तो नहीं था, गलती से तो नहीं कर दिया. सब इवन माय फ्रेंड्स यूज्ड टू से लाइक यार फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया है, पक्का ऐसे ही हो गया है, फ्रेशर था ये वो. बट यू नो हाउ मच यू हैव वर्कड हार्ड फॉर दैट. इवन फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट you skipped the board examination, you went for preparation, you went in the COVID times when everyone was not reaching there. So that was the time you realized कि हाँ यार मैंने hard work put in किया है. Self belief is the foremost thing which will take you to the recommendation, to the plus sign definitely. Because आपको लोग मोटिवेट भी करेंगे, डिमोटिवेट भी करेंगे, डिमोटिवेट ज्यादा करेंगे, एंड लोगों से ज्यादा आपके खुद के फेलियर्स करेंगे when you will start doubting yourself. But for that, whatever I said, I always had that small diya inside me. Whenever I felt, I never like, मेरे घर वाले एक बार बोलने लगे थे, मेरे फ्रेंड्स बोलने लगे थे ये पागल हो गया, जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, आया जा रहा है, बस कुछ नहीं कर रहा. I even dropped 1 year because of that. So that was a kind, I also realized कि यार कॉलेज भी नहीं गया, ये भी गया, I couldn't prepare well for JEE because I was focusing on this thing. I was having so much of pressure. But at the very end, it's you who believe कि नहीं यार पहले भी मैंने किया है, मैं कर सकता हूँ, आई एम मेड फॉर इट, आई विल नॉट स्टॉप वर्किंग फॉर इट. अगर मैंने एक बार यूनिफॉर्म सोची है तो आज नहीं तो कल वो मुझे मिलेगी. इवन इफ देयर वाज अ टाइम आई बिलीव्ड, आई वाज रनिंग इन द ट्रैक and it was raining, still I was running. I was just praying to God कि यार at least make me recommend before my 10+2 attempts gets over, please. I cannot see myself in the mirror because it's this time it was not about joining medicals, this thing, that thing. This time it was just about getting selected, and it's not to prove anyone, prove yourself कि यार you are worth it for it, you fought for it. When everyone was sleeping, you were studying. When everyone was focusing on other things, they were enjoying parties, you were missing that. Lovely. Okay, lot of motivation I also got from you, Ashish. So हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो ऐसे ही आपकी तरह बहुत सारे फेलियर्स फेस कर रहे हैं, और उनके अंदर भी जो मोटिवेशन है शायद से कहीं वो थोड़ा वीक हो जा रहा है. तो आप ऐसे व्यूअर्स के लिए क्या सजेशंस, क्या टिप्स देना चाहेंगे? First and foremost tip, which I told in my interview as well. My interview went around 1 hour 15 minutes, sort of that this time. 2 interviewers were there, and they asked me like around 10, 15, 20 minutes question were only upon that कि यार तुम्हारा हो क्यों नहीं रहा है. Whatever answer I say, he'll just reject it. नहीं मुझे तो नहीं लगता. He just told me तुम्हारा तो ड्रॉप बेकार है, तुमने तो लाइफ बर्बाद कर ली अपनी. Who told you this thing, that thing? So one thing I told him, sir, I was not making to it just because of one thing. There is a slight difference between determination and desperation. One who is desperate, he do, then he thinks. But one is determined, he thinks, then he do. So most of the aspirants, most of the people I meet, I just see कि recommend होना है.
उस लड़ाई, उस होड़ में वो गलती ऐसी कर जाते हैं जो उन्हें दिखाई नहीं देती, और वो करने का तो चलता है कि यार मैंने इंटरव्यू में क्या जवाब दे दिया, तो बोलना ही नहीं था, साइक में मैंने ये लिख दिया तो लिखना ही नहीं था। तो वो करने के बाद रियलाइज होता है यू शुड हैव दैट कामनेस कि हाँ यार होगा जरूर, शांति से आंसर दो, शांति से आंसर करो। वन शुड नॉट बी डेस्परेट एट एनी कॉस्ट। इफ यू आर डेस्परेट, लेट मी अश्योर यू, कभी नहीं होगा। मेरा भी नहीं हुआ 5 बार, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ओनली, कि आई वॉज डेस्परेट किया अर्लियर, आई वॉज द वन हु मेड इट, अब होना है होना है होना है, 144 अगली साल पास आउट हो जाएगा, कोर्समेट्स अंदर है, जाना है जाना है जाना है। दैट वॉज द डेस्परेशन आई हैड ऑन द प्रियर हैंड, बट वन डे आई सैट, आई मेड इट बिलीव माई सेल्फ कि नहीं हो जाएगा यार, शांति से रहो। सो जितने भी एस्पिरेंट्स आई जस्ट एडवाइस यू, बिलीव योर सेल्फ एंड कीप डिटरमाइंड योर सेल्फ, नॉट बी डेस्परेट। आपके इस अटेम्प्ट में, जो कि आपका 7th अटेम्प्ट था जिसमें आपने रिकमेंडेशन हासिल किया है, उसमें आपको कौन सा टेस्टिंग प्रोसीजर एसएसबी का थोड़ा सा टफ लगा, और कहाँ पे बिल्कुल आपने एकदम रॉक करके आगे बिल्कुल अपना ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिखा पाए? मैम, फॉर मी नाउ इट्स लाइक मैंने हर जगह अपना बेस्ट दिया है, एंड फॉर मी अर्लियर आई वाज लाइक कि हाँ यार आई एम वेरी गुड एट इंटरव्यू, आई एम वेरी गुड एट साइकोलॉजी, आई माइट नॉट परफॉर्म इन ग्राउंड टास्क वेल इन पीजीटी एंड दिस थिंग, but by the time when through all this journey I am equally well in all the tasks. One thing I'll say, in the interview this time, interview was quite tough. He was not even, I was, even if I say something ki mera naam Ashish hai, he would deny that for a moment. Whatever I say, he was just denying. And on the very moment he said ki yaar Ashish, you have attended so much of conference. I said yes. So he turned my PIQ and said, oh, 6 times. मैंने कहा yes sir. He asked me how many times you got screened out. I said never. I always got screened in. So he told me you would have heard every debriefing by the board president or deputy president. I said yes. You would be knowing 15 OLQs. Then also I said yes. Then he asked me, tell me OLQ wise where you were lagging behind. Then if you ask any one of us, anyone can answer 9-10 OLQs. No one have on fingertips about 15 OLQs, and you should not have that. You are not assessor. You are just a candidate. So that was a one of a question, and this thing which I never expected, ki I have to tell OLQ wise where I was lagging behind. So this was the case. And in my group discussions and all these things, I was, even from my pre-year, I used to participate in debate, poems and this thing. So on stage performances, because of that, I never felt any times of hesitation in GD and all. Psychology, you practice it from your pre-year hand. Everything can be practiced. VATs, even so much of images are available in the internet flowing there and there. Even in SSB crack, they are supporting so much of candidates by VAT sets, SRT sets. So practice that. And for me now, नींद से भी उठा के बोलो कि SSB देने चलना, I am ready for that. And no need, even I'll say in the Bangalore attempt was the attempt for which I was least prepared. ओह माय गॉड। ओके, तो अभी आप मतलब आप बिल्कुल हार्डकोर रिपीटर बन गए हैं, है ना? Exactly, तो मतलब ma'am. सारे जगह में आप मतलब रॉक करके 10 आउट ऑफ 10 लेके ही आ रहे हैं। वेरी गुड। सो टू यू माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपकी जो ये जर्नी था, जो काफी बहुत सारे स्ट्रगल्स, फाइट्स, फेलियर से भरा हुआ था, ये जो जर्नी था, इसमें आपके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर और सपोर्ट कौन थे? For me, my strongest pillar and support were my parents, who were agreed every time whenever I said कि मुझे SSB जाना है. They were believing कि अब फोन आएगा, अब मिलेगा मिलेगा. Although they inquired so much on my selection कि हाँ हो गया है, but still they always shown कि नहीं, हमारा लड़के ने पहली बार किया, वो वापस कर सकता है. My parents were the prime support to me. Also I have one senior, Ankit Bhaiya. He helped me so much throughout SSB, and he was like, one day he told me after my recommendation, यार आशीष, इस बार मैं सोच रहा था कि यार तू आउट हो गया तो तुझे क्या बोलूंगा, कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं है तुझे. तो I was getting conference out so many times. तो आई होप कि अब उनको नहीं बोलना पड़ेगा, बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं देना पड़ेगा, है ना? सो दैट इज लवली। ओके, तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप इतने सारे एसएसबी अटेम्प्ट्स के लिए आई थिंक इंडिया के सारे एसएसबीज में जा चुके हैं, तो कौन से एसएसबी सेंटर्स आपको अच्छा लगा और क्यों? मैम, अच्छा लगने की बात है तो भोपाल वाज एसएसबी सेंटर हु सिलेक्टेड मी, हु रिजेक्टेड मी. So for me now every selection center is equal. They are ready to select you. They are always ready to select you, because why? They will always check you. And for me, when I was going to Kapurthala, when I was going to Allahabad, everyone was saying nahi lenge, nahi lenge. Nahi liya, obviously nahi liya, galti thi isliye nahi liya. And but now by the time I have realized, even in the assessment process, it's like that, yaar acha karo, pakka lenge.
सारे, कोई बोर्ड खराब नहीं है, कोई बोर्ड अच्छा नहीं है। मेरे लिए आज मैं किसी बोर्ड से सिलेक्ट हो गया तो मैं उसको अच्छा बोलने लगूंगा, आप नहीं हो तो आप खराब बोलने लगोगे। कल को वही बोर्ड आपको सिलेक्ट कर देगा तो आप अच्छा बोलने लग जाओगे। तो ये बात तो सही नहीं है। ओके, तो आपने एनडीए, जैसे मैंने अभी कहा कि एनडीए 4 बार आपने क्वालिफाई कर, एनडीए के लिए भी आप एसएसबी गए, डायरेक्ट एंट्रीज के लिए भी गए हो, तो यस मैम। आपको कौन से एंट्रीज, मतलब डिफरेंस क्या नजर आया एनडीए मतलब रिटन एग्जाम की एंट्री और डायरेक्ट एंट्रीज में, और आपके लिए कौन सा सबसे इजी था? See, first, ma'am, first and foremost difference which everyone knows is the screening process. Direct entries में like for TS 400 की calling आती है, Navy Tech around 120 130 reporting आती है. So it's like that. Screening is the first and foremost process which makes a very big difference. I'll advise everyone to try prepare hard for the written examinations, because of that at least you can ensure yourself कि मैं screen हो जाऊंगा. Even though good candidates get screened out in TS, in Navy Tech, why you never know. Screening is so uncertain कि अच्छा अच्छा परफॉर्म करोगे तब भी नहीं होगे. I was so lucky that I got screened in every time, whether it was a direct entry, whether it was a written entry. So for that, screening is the first difference. And apart from that, I believe, ma'am, 5 days process is almost same for everyone. If you go for a technical entry, they'll ask you certain more technical questions, because of that you are going for. You'll be offered a technical graduate degree, even like you'll offered BTech in Navy Tech and as well as TS. So definitely you can expect some more extra questions based upon your math, science, as compared to NDA. So that is the difference. Otherwise, everything is same. Nothing is hard. Everyone says कि TS में यार 2 सिलेक्शन है, 3 सिलेक्शन है, मुश्किल है. तो TS में जो लोग स्क्रीनिंग हुए हैं वो भी तो वैसे हैं यार. देखो, एनडीए में एक बंदा फिल्टर पार करके आया ऑलरेडी. So which makes a very big बिल्कुल, difference. कंपटीशन हमने सुना है कि डायरेक्ट एंट्रीज में थोड़ा ज्यादा रहता है, वही रिटर्न में Exactly, ऑलरेडी मैम. एक बार फिल्टर रिटर्न में होके मैम आते हैं। रिड्यूस हो जाता है मैम. एक फिल्टर ऑलरेडी है, बट डायरेक्ट एंट्रीज में क्या है कि पहले 10+2% पे था. हाँ भाई, पूरी भीड़ उठ के आ जा रही है, जिसको पता भी नहीं है कि अगले 5 दिन में क्या होने वाला है. मुझे ऐसे लोग भी मिले हैं टीएस एंट्री में, दे नेवर नो कि नेक्स्ट 5 डेज क्या होने वाला है, एंड दे आर जस्ट देयर क्योंकि उनके दोस्तों ने फॉर्म भरवा दिया, उनकी शॉर्टलिस्टिंग हो गई एंड दे वर देयर. ओके, नाइस नाइस। तो अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप डायनामिक्स को लेके। तो जैसे आपने बताया कि सारे अटेम्प्ट्स में आपने इधर रेकमेंडेड हुए हैं, नहीं तो कॉन्फिडेंस आउट हुए हैं, तो सारे जगहों में ही आपका ग्रुप अलग अलग थे, तो कौन सा ग्रुप आपको बेस्ट लगा, और आपके हिसाब से ग्रुप डायनामिक्स क्या कोई रोल प्ले करते हैं अपनी रिकमेंडेशन में? यस मैम, आई वुड से ग्रुप डायनेमिक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. व्हाई? बिकॉज आप 5 दिन अंदर रह रहे हो, आपसे फोन ले लिया जा रहा है, आपसे सब कुछ ले लिया जा रहा है. यू आर देयर, यू आर अलोन, यू नीड टू मेक फ्रेंड्स वेरी इजीली. व्हाई? बिकॉज दोस्त नहीं बनाओगे, खाली बैठोगे, उल्टा सीधा सोचोगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा. यू विल थिंक अबाउट रिजल्ट्स. सो मेक फ्रेंड्स. एंड आई वुड से यू आर एस्पायरिंग फॉर अ लीडर, एंड फॉर अ लीडर कोई ग्रुप खराब नहीं होता. एंड अगर लीडर को ग्रुप खराब नहीं लग जाए तो वो कभी कुछ नहीं करेगा. सो नेवर क्रिटिसाइज कि हाँ यार उसने मुझे जीडी में नहीं बोलने दिया, उसने मुझे ये नहीं बोलने दिया. आई हैव हर्ड सो मेनी थिंग्स दैट कि यार वो ये कर रहा है, वो मुझे सीटी के लिए बोल रहा है कि मुझे सबऑर्डिनेट बुला लो, दिस थिंग दैट थिंग. दिस कीप दिस थिंग्स इन अपार्ट अप टू टास्क ओनली. नेवर टेक देम टू योर डॉर्मेटरी कैंडिडेट्स लाइन. There enjoy yourself, make bonds, because why these bonds you will see when you'll make it. Those people who were with me in my very first attempt, they are still with me. They still congratulate me, they still cherish me कि हाँ यार पांडे you deserved it. So I know, because last में आपका recommendation आपके साथ रहेगा, and जो आपने वहाँ पे दोस्त बनाए हैं, जो आपने relationships establish किए हैं, वो रहेंगे. Because selection तो आप आते जाते रहोगे, पर दोस्त अच्छे मिल गए तो वो आपको help करेंगे आपकी जर्नी में. Okay, yes, absolutely. Memories matter, persons matter, relationships matter, right? And Yes ma'am. success में यही बहुत बड़ी चीज है, हम लोग को हासिल होता है, along with the achievements, obviously. Even ma'am, I would say I have seen many people, they are like यार ग्रुप में फिश मार्केट हो गया, बोलने नहीं दे रहे, ग्रुप अच्छा नहीं था. क्या कर लोगे यार ग्रुप क्रिटिसाइज करके? इवन दो यू आर इन अ ग्रुप, यू आर जस्ट इंडिविजुअली. आप जीटीओ का टास्क देखो, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल आप अकेले दे रहे हो, कमांड टास्क आप अकेले दे रहे हो, लेक्चरेट आप अकेले दे रहे हो. सो आधे इवन एचजीटी में भी ऑलमोस्ट ग्रुप 4-5 का रह जाता है. सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर फाइटिंग अलोन. लेक्चरेट आप अकेले दे रहे हो. तो ऐसी चीजें हैं कि आप देख रहे हो कि हाँ यार मेरा उस पर्टिकुलर मुझे बोलने नहीं दिया तो इसलिए खराब हो गया. तो मेरा ये मानना है, फॉर ग्रुप डिस्कशन लोग लड़ने लगते हैं. आई ऑलवेज वेंट विथ सच अ माइंडसेट कि यार मैं किसी का मौका छीनूंगा नहीं और मैं अपना मौका किसी को दूंगा नहीं. सो यू शुड कीप दैट थिंग इन माइंड, which should not turn into a fight. It sometimes I have seen in SSBs in the dormitory, it's turned into a heated discussion कि यार तेरी वजह से ये हुआ, तेरी वजह से नहीं हो रहा, मेरा तेरी वजह से. तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, ये मैटर नहीं करती. ज्यादा से ज्यादा हम लोग ये फाइट्स जो है रिपीटर्स के ग्रुप्स में ज्यादा देखा जाता एग्जैक्टली मैम. है ना, फ्रेशर्स के ग्रुप में उतना ज्यादा नहीं होती.
ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने बहुत टाइम से एसएसबी अटेम्प्ट्स के लिए जा रहे हो, तो आपने ऑलरेडी जो है स्कूल लाइफ, अपनी एकेडमिक्स जो है, बोर्ड एग्जाम्स वो पास किए, अपने कॉलेज में हो आप, और अभी आप स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी थे आपके और अभी भी है कॉलेज में, तो ये सारी चीजें आप मेंटेन कैसे करते थे अलोंग विद द प्रेपरेशन फॉर एसएसबी? सी मैम, आई बिलीव प्रिपरेशन फॉर एसएसबी कैंडिडेट्स के दिमाग में 24 घंटे घूमता रहता है अगर उनकी एसएसबी आनी होती है कि यार एसएसबी अभी 4 महीने डेट्स भी आउट नहीं हुई, जैसे 149 कोर्स की अभी डेट्स आई हैं कल परसों में, तो सब लोग ऐसा करते हैं कि डेट डेट डेट। इवन आई हैव सम भैया लोग एज वेल हु आस्क मी आशीष क्या करना चाहिए, दे आर लाइक एसएससी टेक इसकी उसकी डेट आ रही है। आई बिलीव कीप योरसेल्फ वर्किंग, डोंट फोकस सो मच ऑफ एसएसबी कि यार दिमाग में वही चलता रहे 24 घंटे, बिकॉज वो प्रेशर देगा आपको आज नहीं तो कल अंदर जाके। Focus on life, enjoy your life, enjoy your moments. जो आप गेम खेल रहे हो, like in college also after class, my class gets over around sometimes 3:30, sometimes 4:30. I used to play volleyball, basketball, whatever I get time to. Even sometimes I go to badminton also. So that is the thing. 24 घंटे दिमाग में वो लेके चलते रहना कि मैं इसलिए खेलूं कि एसएसबी है, then I am very sorry. आज नहीं तो कल आप खुद से धोखा कर रहे हो। Play for yourself, play for your own enjoyment. That will definitely come out by yourself in the interview. I can tell you कि उससे अच्छा कुछ नहीं होगा। Splendid. खेलो इसलिए कि अच्छा लगता है, इसलिए नहीं कि वहां मैं बता पाऊं। Of course, yes, absolutely. Even while writing PIQ, I have seen some candidates, I will not name, he is also recommended once. He is like, भाई कोई हॉबी बताना, कुछ कुछ कर बताना, मैं लिख दूं। मैं कहा एक बात बता, तू लिख देगा एंड अगर क्रॉस क्वेश्चन पकड़ लिया गलती से, देन वो मेरी हॉबी है, मैं उस पर आंसर कर सकता हूँ पर्टिकुलरली। हाउ यू कैन आंसर मैन, इवन दो आई टेल यू कि these आर द थिंग्स, स्टिल यू विल नॉट बी कॉन्फिडेंट। आप वहां हकलाने लग जाओगे, एट द वेरी मोमेंट यू विल स्टार्ट फंबलिंग कि यार नहीं हो रहा मेरे से। एंड वहां पे जब ऑलरेडी प्रेशर होता है ना, तो सारी ऐसी चीजें याद आने लगती हैं कि यार गलत बोल दिया, गलत बोल दिया। सो दैट इज द थिंग। And they're there to catch your all your lies and all your truths, right? So it's very difficult. They are very trained. Of course. Okay, so my next question is, जब एसएसबी सामने आती थी, मतलब जब आप प्रिपरेशन एक्चुअल में करते, क्योंकि सामने एसएसबी है, तो आपका डेली रूटीन क्या होता था? Ma'am, as soon as I got the dates, for me daily routine was very important. Why? Because although being very honest, सब बोलते हैं इंटरव्यू में जाके कि हाँ भाई हम 5 बजे उठ जाते हैं, हम 6 बजे उठ जाते हैं। सच्चाई ये है कि डेली लाइफ में आई बिलीव कुछ लोग उठते होंगे, आई कैनॉट से सब उठते होंगे, कुछ लोग उठते होंगे, बट हाँ एसएसबी से करीब 1 से 2 महीने पहले या 15-20 दिन पहले आई यूज्ड टू इनकलकेट सच अ हैबिट कि हाँ मैं सुबह उठूं, मैं अपना माइंड रिफ्रेश करूं और मेरा माइंड सुबह एक्टिव रहे। वाई? बिकॉज आपको सुबह वहां एसएसबी में 5-6 बजे उठना पड़ेगा, आपको जीटीओ के लिए जाना पड़ेगा, आपको वहां पे जीडी के लिए आइडियाज चाहिए दिमाग में। आप वो अगर आपका माइंड सोता हुआ रहेगा, यू विल बी स्लीपी, यू विल नेवर गेट आइडियाज। सेकेंडली, यू विल हैव योर साइक टेस्ट अराउंड 7-8 AM, 8:30, 9 AM in different boards. So that is the thing, you should get ideas, you should be not in your comfort zone कि हाँ 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 मैं सो रहा हूँ and लिख रहे हो। No, because as people say, even for competitive exams, practice in that much of time, that same time you are having an exam, it goes same for the SSB as well. Why? Because आपको जब सुबह सुबह मैं एक दिन अचानक से उठा के बिठा दूंगा, तो you'll not able to answer that much. If you have practiced it on your prior hand, you'll be like कि हाँ I am active, I can answer, I can handle the situation, whatever is offered to me. So for me, I would wake up around 5:36. I'll just go for a running or simple for a walk. I'll come back, I'll get refreshed. My college से SSB गया तब, even college time I can't do many things. I'll go to my college, come back, used to study whatever I have for my college first, then I used to study for my SSB, and then after that, if I get some time, I used to play. And for that, if you have any hobby, like I know like if you go to college, those who are aspiring for NDA and are in college first year or first second semester, they have their hobbies. Sometimes you won't get time, but before SSB, at least it's your own hobby that you had. Give some time to it so that you can get refreshed to it. It's not about just to show, it's about to practice the same that you had earlier. So Okay. make your routine in such a way that it should get aligned with the SSB. ओके, तो आप अपनी अपनी हॉबी के बारे में कुछ बताइए, और कितने टाइम आप हॉबी को प्रैक्टिस, आई वुड से कि हॉबी जो है वो फॉलो कर पाते थे आप एक वीक में? Ma'am, for me, my hobbies were I used to listen very much of poems and shairis. Then I started writing as well, some of them. Then my friends asked me to create a page on Instagram. I created that. I kept on writing. Then for that, in college, I didn't got so much of time. But before that, when I was in the drop, I was not like कि मैं खाली बैठा हूँ. I was either preparing for something
or either I used to utilize my time in writing something or listening something at least. Even if I couldn't write, I used to listen, because by listening you'll get certain ideas. Not in case of this thing, any of thing. So that is one Very of my nice. hobbies. I used to practice Sudoku sometimes, and और कुछ नहीं मिलता है तो यार दौड़ने निकल जाओ, खेलने निकल जाओ, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं. One of my interests were, that I told in the SSB, were also adventures. Whenever I got the time, I have participated 4 times at adventure camps from the Air Force. So that was the thing. I never missed any opportunity. If there is even an adventure camp, the date has got out for the registration, I used to request my father to request to the concerned authority and get my name there, so that I can never miss any of that. आपके फेवरेट एडवेंचर एक्टिविटी क्या है? Ma'am, I have, ma'am, favorite adventure activity अभी की नहीं है. I was planning for the scuba diving. I didn't got the opportunity yet. I have done PHG, paragliding, parasailing, bayonet fighting, zip lining, and there are, I know, slingshot, river rafting, various other things I have done, ma'am. माय गॉड, एन एडवेंचरर इन स्पिरिट. वेरी गुड. आई होप कि एडवेंचर्स हमें ये जो मोटिवेशन है ना हमारे अंदर की, ये एडवेंचर्स ही हमें दे सकते हैं. सो यस, एन Yes, ma'am. एडवेंचरर लवर लाइक यू शुड हैव दिस मोटिवेशन ऑफ नॉट गिविंग अप. सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके लाइफ का सबसे बड़ा रोल मॉडल कौन है? Ma'am, for me, my role model is, apart from, I would say, आप पूजा पाठ में believe रखते हो, no matters which religion you are from, take Ramayana as a story. I always took Lord Shri Ram as my inspiration. Why? Because it's not very easy. People get recommended and they start feeling like कि मैं ही राजा हूँ, and जो बंदा कल राजा बनने वाला है उससे सब छीन लिया, सब, उसकी वाइफ गुम हो गई, उसका भाई पड़ा हुआ है. Still, you can imagine the sense of calmness he have in mind. आज एक दिन किसी का फॉर सो कॉल्ड समवन स्पेशल का मैसेज नहीं आता है तो व्हाट्सएप पे कहाँ स्टार्ट हो जाता है, एंड वहां पे बंदे बहन क्लोज वन गुम हो गए, बीवी गुम हो गए, एंड ही इज स्टिल सर्चिंग विद द होप कि हाँ यार सब अच्छा होगा. So that is the thing. I believe you should keep so much of calmness in your mind. Learn. I would not say, at least listen to Ramayana once as a story. You'll learn many things. Great, great. So I have seen, I think the first defense aspirant who's relating, all these things and making Sri Ram as the role model. A very rare case, I would say. So my next question is, आप SSB क्रैक एग्जाम्स को अपने जो आने वाले डिफेंस एस्पिरेंट्स जो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर या SSB के लिए प्रिपेयर कर रहे, हमारे जो हार्ड कोर डिफेंस एस्पिरेंट्स है उनको रिकमेंड कैसे करोगे, और कितने में आप रिकमेंडेशन उनको करना चाहते हो SSB क्रैक एग्जाम्स? Ma'am, SSB crack exams, we all know it's one of the biggest platform in India who is helping the defense aspirants. And I believe जो daily news analysis है for NDA exams, before that some PYQs comes, questions on topics come. मैंने practice किया मैम same videos से खुद देख के. So that is the thing. बहुत जगह material पड़ा हुआ है. You have to segregate these things. I have practiced from this platform. That's why I know their current content is so good. Their news analysis is good. You can utilize the same information there. Secondly, the motivation they give. They took interview. Even I say, I will not like कि हाँ मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, but at least I believe कि अगर एक बंदे का भी मेरे को देख के भला होता है तो I am very thankful for that. So that is the thing, the motivation they provide from the different success stories. Like लोग कैसे कैसे struggle कर रहे हैं. Even there was a Didi, I remember, he also said the same line. I still remember that line. SSB crack, she wrote कि एक बार किया हुआ कर्म बिना फल दिए कभी जाया नहीं होता. So that was the thing. She got merit out, I think 4 times. Even she also got conference out twice after getting recommended. So that was the thing. After seeing her, I believe कि नहीं यार मेरा भी हो जाएगा. So that was the case of mine. I always believed the stories they offer, please read them. You will get at least inspiration, motivation. Also, you will be charged up कि नहीं अभी रुकना नहीं है at any cost. Thank you so much, Ashish, for the motivation that you have provided for our viewers. My last question is about what you are planning to do before joining the academy. अभी जैसे आपने बताया कि मेडिकल्स बाकी है, तो उसके लिए आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, और फिर और क्या प्लान्स है, जो सेलिब्रेशन या कुछ भी जो भी आप प्लान कर रहे हो बिफोर जॉइनिंग द एकेडमी? आइए नयजी माला. So, ma'am, as far as the medicals are concerned, I went to Bombay for surgery is not allowed at 10+2 level. I went for a natural treatment. I rectified it up to some extent. I'm practicing the same exercises. Also, I'm waiting for the call for the medicals. Also, before joining, if joining letter comes to me, then I'll definitely go to my teachers first. Like right now, I have completed my 12th from Jodhpur.
Rajasthan. So I'll go there, I'll meet them, I'll thank them. And I'll also go to Air Force Hindon, where I have completed my from class 4 to 9th. I'll thank my teachers as well. And definitely for me, I'm a kind of person who always believes in a superpower, in a God. And I'll go to Ujjain for Mahakal, definitely for that, to pray him for the final chord, because of him, because of the powers he gave me, because of the blessings, because of that I am here now and I conquered this. So that is my plan before joining. And Great, as great, far Ashish. as parties yet pending for my friends, I just told ki these same things happened earlier as well. And at that time I was also celebrating ki हाँ सब अच्छा होगा. It didn't happen, so last में खुद ही दुख होता है कि यार कुछ नहीं हो पाया. So I have kept them on hold. In Bangalore, there is a Leela Palace where we had our freshers. It was so costly. I have promised them to take them there. So that is the case. Nice. So the party is in the line, I would say, for everyone. So we are also going to wait for your joining letter, Ashish. Please let us know when you'll be joining the academy. And I wish you all the best for your upcoming bright future. May you don that uniform that you have been waiting to wear since so many years, and you have been trying and struggling for so long. So again, thank you so much for spending some time with us and enlightening us with your struggles and how you overcome them in your journey towards SSB. Thank you so much, Thank you. Ashish. Thank you very much, ma'am. Thank you, ma'am.